Hello everyone, welcome to Career Launcher, and today we are here to discuss PGDBA exam. So, am I audible, everyone? Yes, no? So, hello Varun, am I audible clearly? Okay. So, how was your exam overall? What did you feel about it? So, any thoughts about PGDBA? There are a lot. There are not a lot of test takers for PGDBA. It's not a very common exam that a lot of people want to take. So, I think last year number of test takers were uh, uh, test takers for PGDBA were close to 5,000 or something. I'm still not sure that why there are so less number of people who are taking so less people who are taking PGDBA exam. It is a very good course. So let's start. Okay, Saloni. So basically, this is the standard pattern of PGDBA is quantitative aptitude. There are 25 questions. They call it quantitative aptitude. In reality, it's not quantitative aptitude. It's pure maths. So quantitative aptitude, what is quantitative aptitude? We talk about the percentage, profit loss, simple interest, compound interest, and those kind of things. The core maths is what your uh, uh, trigonometry, your metrics and determinants. Then you have your continuity, differentiability, differentiation, integration. So those kind of things. So PGDBA doesn't have aptitude. They call it aptitude. It's not aptitude. It's pure maths. In data interpretation, they have given us this year. They have given us only one set that had 5 questions. Logical reasoning, it was not, I would say, logical reasoning. It was more or less analytical reasoning, because there were single questions and they were easy questions, and I would say 5 questions and individual questions were there. And verbal ability, how did they bifurcated verbal ability to RC sets plus 2 and 5 questions each, and two your fill in the blanks plus 3 parajumbles. So basically, this is the total bifurcation of VA. Probability, we had close to 5 to 6 questions. Integration, we had 3 questions. Functions, we have 5 questions. Continuity, differentiability, 3 questions. Number system का एक ही question था. Trigo plus 3D was 5 questions, and determinant matrices were 2 questions. Total number of questions were 25. एक सेट है उसका, so we have already talked about it. So basically, what I am going to say, as compared to last year, what I felt it was that difficult. Uh, this year, I think I had more questions in maths that were difficult for me. The LR was definitely easier as compared to last year. DI was, again, I would say it is easier than as compared to last year. But maths part, I would say it was a little more difficult as compared to last year. I'm not sure why Varun and Saloni is saying it was comparatively easier. When I wrote PGDBA last year as well, I have written this year as well, and I didn't feel that the maths part of it was easy. Not at all. The questions of permutation combination in PNC, I would definitely say those questions were easy. But apart from that, I don't think any other question, the differentiability questions were easy as compared to last year. So last year, Saloni, you have seen, Saloni and Varun, have you seen PYQs of this PGDBA? Yes, no? So अच्छा DILR VARC के बेसिस पे, yes, on the basis of DILR and VARC definitely it was easier. लेकिन last year तक, if I talk about 25, 24, 23, 22, 21, every year I used to get couple of questions in math part जहाँ पे आंसर एडवांस में पता होता था, because they used to pick up questions directly from NCERT. ठीक है, this year there was no question in the exam that was directly picked up from NCERT. उन्होंने एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं दिया. So basically I didn't remember any of the answers.
till last year I used to remember couple of questions, उनका आंसर सीधे पता ही होता था क्योंकि they didn't change, वो सीधे उठाया उन्होंने डाल दिया एग्जाम में. So these kind of paper we had, but this year if you have some question, I have solved more or less every question in the exam. So एक ये क्वेश्चन था कि एक फंक्शन था, फंक्शन वाज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स प्लस वन, इसका रेंज पूछा हुआ था. सो द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज -1 to 3. So that was the answer of that question. ठीक है. इन डीआई आई रिमेम्बर वन क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन वाज ये गेम्स एंड टूर्नामेंट का क्वेश्चन था. देयर वर 4 टीम्स and the marking scheme was +3, 1, +1 and 0. Anyone remembers that question? The answer of that particular question उसमें पूछा था, the question that they asked was the team that is going to be last, what is the maximum possible score of that particular team? So answer of that question was 2. So answer was 2. Very nice, Rudra. So answer उसका 2 ही था. ठीक है. Any other question if you can tell me, I will definitely, I don't remember every question, लेकिन जो बोलोगे तो I think I would remember the answer. Now ये वाला क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन वाला क्वेश्चन के यू आर लुकिंग एट अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज समथिंग, देन यू कवर द डिस्टेंस दैट इज ट्वाइस ऑफ दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ दैट टावर. ठीक है. सो उसका आंसर दैट वाज पाई बाय 12. वो डी डी एम एम वाई वाई वाला जो क्वेश्चन था, द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन वाज 132. उसका जो आई think f of x, I'm not sure I have written that question. Rudra, just give me a moment. So Saloni has asked that DDYYMM, the DDMMYY wala question tha. Rudra, I'll get back to your question. And it was this. अब अमेरिका में ये अपोजिट हो जाता है या फिर कहीं और अपोजिट हो जाता है, इट बिकम्स MMDDYYY. And so how many values are there? So that is going to be 132. 132. So basically, only level, you know, why? Yes, 144 minus 12. That would be the answer. So answer is going to be 132, not 144. So that was the कॉमन एरर पार्ट. लोगों को लगता है कि फर्स्ट प्लेस पे 12 पॉसिबिलिटीज होंगी, सेकंड प्लेस पे 12 पॉसिबिलिटीज होंगी, सो टोटल 144 हो जाएगा. सो उसमें ये दिक्कत फंसती है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 0101, तो यहाँ पे इंटरचेंज होके डेट फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? सो Varun, I'll come to that question as well. And I think I'm trying to figure out the remember the question of that part, AR part. So LR part के अगर क्वेश्चन हो तो वो बता दो. I'll discuss those first, then quant वाला देख लेते हैं. Rudra, the thing is, जो pi by 6 था, pi by 6 was actually twice the angle. So 2 alpha is equal to pi by 6. And so alpha, they were asking the value of alpha, that was pi by 12. This is what I got. ठीक है रुद्रा. Now ये वाला क्वेश्चन, this is what suspect PQR, who is definitely going to be the thief. I think that is going to be R. The F-3, uski value, I think everyone is saying 33, even I got 33, but I am not very convinced with my own answer. So F-3, that was उसमें ये था कि f of x plus y is equal to f of x into f of y. So basically I have assumed a function over here, and that function was f of x is equal to a power x, and I solved accordingly. So who's going to be? It was Q. I'm not sure I got R. So हो सकता है, देखो, I am not guaranteeing that I am getting right, but more or less I got it right. So उसमें अगर तुम बोल रहे हो Q, I got R, there might be discrepancies. कैलेंडर का आंसर 132 है, that I am very sure of. इसको I solved this way, and answer of this one, that was 14/50. I am not sure how many people have solved this question, but answer of this question was 14/50. The question was, that was integration of 0 to 2 pi and mod of pi sin x dx is equal to k pi, and I got the answer of this, that is k is equal to 4.
And because it is mod, so basically the graph is going to go like this, something like this. So ऐसा टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा. सो आंसर इज गोइंग टू बी, वो नॉन सिंगुलर वाले का आंसर जो था तुम्हारा, नॉन सिंगुलर वाले का, द आंसर वाज 112. यस यस यस, वेरी नाइस. सो देयर वर मैट्रिसेस एंड हाउ मेनी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर 112 है. यस, द वेरी नाइस. इवन आई गॉट 112. X plus 2y plus 4z is equal to 12. The question is talking about what is the maximum value of x into y into z. Answer of this came out to be 8. So basically that was the question and we got the answer like this. Okay. Now this is one of the best questions I have seen in the exam. Tricky tha, lekin if you expand it, you are going to realize the degree of this is going to be 7. It looks like everyone feels either it is going to be 8 or it is going to be 5. The answer is 7. Yes, the answer is 7 itself. The degree of this, I expanded the whole thing and got the answer. Yeah, 7 is the answer. Now, यहाँ पे आपका वो 3D वाला था जहाँ पे mod of x plus mod of y plus mod of z is that is less than equal to 1. अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या है, इस शेप का वॉल्यूम क्या होगा. That is going to be 4/3. Yes. So Krishna got 4/3. Yes. The degree, Krishna, yes, degree is going to be 7 and it is going to be 4/3 only. So इसका आंसर जो है, अब you can again it is going to be a diamond type का चीज बनेगी 3D में. जैसे ये हम लोग mod of x plus mod of y का बनाते हैं, उसमें ही थोड़ा बाहर की तरफ बन के वो आपका थोड़ा डायमंड टाइप का शेप बन जाएगा. सो आंसर इज गोइंग टू बी फॉर दिस वन. Now 3 couples, men and women alternate. No wife is sitting next to husband. ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर was 2. There are only 2 arrangements where 3 couples can sit. Divisible by 5 वाला जो क्वेश्चन था, आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन वाज 580. यस, उसमें आई थिंक देयर वर सम नंबर्स 1 2 3 अप टू 20. इतने नंबर्स थे और आउट ऑफ दीज मेनी नंबर्स you are multiplying 3 numbers, you are selecting 3 numbers and multiplying 3 numbers. In how many ways you can select so that product is not a multiple of 5. So answer came out to be 580 of this question. Saloni, answer of that question is not 6, that is going to be 2. Now this one, x plus y equal to 6, is a normal to this curve, that is y square is equal to 8x. x1 and y1 are the points. And what is the value of x1 comma y1? So answer came out to be 2 comma minus 4. ये normal है इस curve की. So answer was 2 comma minus 4. Now this was the question जहाँ पे probability given है. Probability, there are 2 events जहाँ पे E1 के होने की probability 2/3 है, E2 के होने की probability भी 2/3 है. और बोला हुआ है कि क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि E1 intersection E2 complement and that is 2/9. Now question is talking about, कोई तो इसमें से क्वेश्चन था. Oh shit. -4 doesn't lie on normal and that's the mistake I have made. The answer should be 2 comma 4. Yes. So that's the mistake I made. Okay. So I am sorry I got this one wrong. Now इसमें जो क्वेश्चन था इसका जो आंसर था that was probability of E1 intersection E2 into 2 and that is equal to probability of E1 union E2. That was the answer. Yes, yes, yes. Only level, that was the answer of this question. यही था. There was one other question जहां पे 3 probability की 3 events की बात हो रही थी, जहां पे E1, E2, E3 की बात हो रही थी और कुछ अजीब से ऐसे ही साइन बने हुए थे. And the question was talking about the probability of E1 union E2 union E3. Something like this was the question, right?
The answer of that question was 0.65. ठीक है. Now these are the questions that I remember, जिनके मुझे क्वेश्चन भी याद है, आंसर भी याद है, जो जो बीच में आते गए उनके मैं आंसर बताता गया. उसके अलावा अगर आपको कुछ और याद है तो आप बता सकते हैं. उसका यूनियन वाला मीन्स इवन यूनियन. अच्छा, वो थ्री वाला. नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन दैट ओनली लेवल हैज आस्क्ड. दैट इज वो लिमिट वाला जो क्वेश्चन था, दैट वाज आई थिंक x by 3 एंड 3 by x. इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन x अपॉन 3 by x, इसकी लिमिट x वो नहीं करती है. सो बेसिकली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इसकी लिमिट करेगी, इसकी करेगी, इसकी नहीं करेगी. ठीक है. ओनली लेवल फाइन. नाउ बीटा वाला जो क्वेश्चन था, बीटा वाला क्वेश्चन मोर लाइकली आई वोंट आंसर द क्वेश्चन. आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई एम वेरी अनश्योर अबाउट दैट क्वेश्चन. प्रोग्रेशन वाला जो क्वेश्चन था, उसका जो आंसर था, कृष्णा हैज आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चन. जो प्रोग्रेशन वाला क्वेश्चन था, हाउ डिड आई डू, उसमें ये बोला हुआ था कि आई थिंक आई इज लेस देन जे and it is talking about I into j. Is it or is it not, Krishna? So basically what did I do, I put j equal to 2. So basically 1 2 up to n. तो मैंने ये मान लिया कि जो n है, n is equal to 2 and only first option was satisfied. So I think, Krishna, the answer you have written, I think that is the answer I got. ठीक है. So इस वाले का जो आंसर है, that Krishna has already written, I think I got the same answer. Let me write that answer down. So I simply put n equal to 2, got the answer, and it was n by 24, n minus 1, n plus 1, 3n plus 2. More likely, I think I do remember I got this answer only. Answer बहुत बड़ा था. Copy किया हुआ है क्वेश्चन? No, basically yes, I can solve that question by using theories and all. लेकिन put n equal to 2 ना, you will get the answers only. कैट की तैयारी में यही तो सीखे हम लोग कि put n equal to 1, n equal to 2, you will get the answer. वो 3D ज्योमेट्री वाले का the answer was 9 by 2 only. Yes. वो I think the question was x minus 1 upon 2 or something like this था. टू लाइंस इंटरसेक्ट का आई थिंक दैट वाज लैम्डा की वैल्यू जो पूछ रहा था, आई थिंक दैट इज 9 by 2 only. Is it? So last year, if I any other question that we got? So if I talk about last year itself, last year, yeah, the answer is we should find lambda. Answer is 9 by 2 only. So basically, let me tell you one thing. Till last year, I think in 2022, I think that was my golden year. I got 135 marks in PGDBA. Definitely, I got a call. In 2023, 24, again I got call, but my score was little lower. So I would say I got a call at one time it was 100 above 100, one time it was little less than 100. So 97, 98. So the cutoff is going to be, I would say the cutoff this year should be a little higher as compared to last year. I think it should be 95-ish. If Chat GPT probability answer was 2 by 3. देखो, लास्ट ईयर जो कॉल आया था, लास्ट ईयर आई थिंक पीपल गॉट कॉल एट क्लोज टू 85-ish to 90. हाँ, चैट जीपीटी का आंसर 2 by 3 है. So last year people got call or at a score of 85 to 90. This year I think it is going to be little higher क्योंकि QA was a tad tougher. थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था.
DILR has become far easier as compared to last year. ठीक है, so basically cutoff must rise 2 questions, 3 questions. So I would say 92, 93 will be a good score. Cos A minus B, वो मैट्रिक्स में cos A minus B वाला वरुण, राइट? मैट्रिक्स में cos A minus B वाला क्वेश्चन, आई थिंक दैट इज 1/2. Aryan, you got -1/2. I got 1/2. एक आध गलत हो गया होगा, ठीक है. सो आई गॉट 1/2. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. हाँ हाँ, वन आई गॉट 1/2 इन दैट. ठीक है. So again, I am not saying that every answer I am giving right now is correct. I might get couple of errors. Yes, definitely not a lot of errors. एक दो आंसर गलत हो सकते हैं मेरे भी, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि इस बार द सेफ स्कोर कॉल लेने के लिए आई वुड से इफ यू आर गेटिंग 30 इफेक्टिवली 32 करेक्ट. इफेक्टिव 32 करेक्ट मींस 95 96 ओवरऑल स्कोर. सो इसका मतलब आई वुड से इसका मतलब आई वुड से यू विल गेट अ कॉल 95 96 मोर और लेस. द नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स आर लो. ठीक है, आई थिंक इस ईयर का आई डोंट रिमेम्बर द डेटा ऑफ दिस ईयर. वर्मन, यू आर गेटिंग -1/2. आई गॉट 1/2. ठीक है. आई थिंक इन वन मोर क्वेश्चन आई हैव मेड अ एरर ऑफ साइन. इसमें भी हो सकता है मैं साइन एरर वापस से करके आ गया हूँ, तो हो सकता है. ठीक है. सो यू कैन एक्सपेक्ट, देखो 100+ और आई वुड से 100+ इज अ गारंटी कॉल. ठीक है. देखो अनंत, आई वुड से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नो वन शुड से कि यही आंसर होगा. नहीं अनंत, डिग्री वाले का तो 7 ही है. आई डिड द होल एक्सपेंशन. एक्चुअली आई डिड होल एक्सपेंशन पूरा. मेरे टाइम बहुत था तो मैंने पूरा एक्सपेंड कर दिया उसको. A+B⁵ और A-B⁵ के फॉर्मूले से. तो दैट्स व्हाट आई डिड. ठीक है. सो बेसिकली आई वुड से 105 का मतलब गारंटी है. गारंटी का मतलब गारंटी. 105 पे कॉल आ ही रही है. ठीक है. सिंगल स्लॉट में होता है, मल्टीपल स्लॉट नहीं है. तो यहाँ पे जो इस एग्जाम में जो आ रहा है, थीटा हेडन वाज 4/3. द मैक्सिमम डिस्टेंस वाला वो पैराबोला से उस पॉइंट का आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द आंसर. ऐसा ही कुछ था, √5 या ऐसे कुछ था. आई डोंट रिमेम्बर दैट आंसर. ठीक है. वो पैराबोला से 3,2 वाले पॉइंट का, हाँ ऐसे ही कुछ था. आई डोंट रिमेम्बर. ऐसा कुछ होना चाहिए. सो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट द पीजीडीबीए थिंग, 105 गारंटी है. कहाँ लिखा हुआ है गलत? अरे मेरा आंसर गलत लिखा हुआ है ना, तो उसका 2,4 है. आई चेंज्ड. आई सेड सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक. ठीक है. So, getting a call, you should be very, very much positive if you are getting a score that is 95+. ठीक है. अनंत, डिग्री वाले का आंसर है 7 ही है. ठीक है, 7 ही है डिग्री वाले का. ठीक है. दिस इज नॉट आई एम सेइंग आई एम चेंजिंग दिस आंसर. दिस इज व्हाट आई कैलकुलेटेड. आई स्पेंड 10-15 मिनट्स. कैलेंडर वाले का 132. So at 95+, you should be very hopeful about the call. At 105, you should be sure of the call. Between 85 to 95, I would say कि मतलब you shouldn't lose hope. उस पे भी कॉल आ सकती है. नॉट श्योरिटी नहीं है. Below 80, I don't think there is a chance. ठीक है. उसका जो आंसर तुम बोल रहे हो, y is on Saturday, yes that is right. Y is on Saturday only. सो वो LR का जो क्वेश्चन कृष्णा बोल रहा है, that VARC was always that easier. So I think the para jumble was Anand, US India date wala, that was 132.
So VARC was easy. So basically, आप getting, I think getting 90 marks shouldn't be a big deal, even if you are not very good at maths, because आप जो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का मतलब VARC, LR, DI, 25 में I would say 20, getting 20 is easy. And out of remaining 25 math question, getting 7, 8 or 9 right, 25 में से 7-8 सही करना, आई डोंट थिंक दैट्स अ टफ टास्क. सो 8-9 अगर सही होगा, यू विल रीच एट द आई एम नॉट लूजिंग होप वाला वो. ठीक है. सो वो ध्यान रखना है कि उसमें मतलब मैथ्स में बहुत अच्छा होने की जरूरत नहीं होती पीजीडीबीए में. यू जस्ट नीड टू बी डिसेंट इनफ, बिकॉज वीएआरसी हमेशा आपका स्कोर बढ़ाता है, उसमें डीआई और एलआर भी स्कोर बढ़ाता है. इट डजंट हैव अ दैट लाइक थिंग. Krishna, quadratic equation ka p greater than 4. When you are going to solve the quadratic equation and solve everything, you are going to realize there are going to be two ranges, p greater than 4 and p less than -1. And unfortunately, both of them are in the option. But then you need to see कि वो root 3p दिया हुआ है, तो p can't be negative. So इसलिए आंसर उसका p greater than 4 होगा. पी क्यू आर गिल्टी वाला मुझे आर मिला है, बाकियों का कुछ और मिला है, तो so I'm not sure now. ठीक है. So so how you people are faring so far? Anyone who is getting 100 plus? अभी तक जो डिस्कशन हुआ है, किसी का 100 प्लस लग रहा है? किसी के अंदर फीलिंग ही नहीं आ रही 100 प्लस वाली अभी? बाकी अनंत सिंह, ठीक है, अनंत कृष्णा. नहीं, फीलिंग है. देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आ ही जाएगा. अभी जो डिस्कशन हुआ है उस हिसाब से लग रहा है कि आ सकता है कि नहीं आ सकता. बेस्ड ऑन द आंसर्स डिस्कस्ड, आई एम टेलिंग. उसमें शायद एक दो ऊपर नीचे होंगे. ऐसा नहीं है कि हमने जो आंसर डिस्कस किए हुए हैं उसमें से एक ही दो सही है, बाकी सब गलत है. ऐसा नहीं होता है कृष्णा. एक आध गलत होते हैं. ठीक है. सो जो आंसर डिस्कस हुआ है, एनी वन इज वेरी होपफुल के 100 आ जाएगा, या फिर 80 प्लस आ जाएगा, 85 प्लस आ जाएगा. एनी वन हु इज सिटिंग एट 90 प्लस रेंज के 30 क्वेश्चन तो मेरे सही होंगे ही होंगे. किसी को भी नहीं लग रहा अभी? ऑफ अनंत सिंह 90 प्लस फॉर श्योर. 100 प्लस में थोड़ा सा डाउट है. सलोनी सिंह 80 प्लस, मतलब दो तीन क्वेश्चन, अगर तीन चार क्वेश्चन ठीक ठाक से कट गए तो इसका मतलब 90 हो जाएगा. आर्यन इज ऑल्सो सेइंग 80 प्लस एक्सपेक्टिंग. 80 प्लस एक्सपेक्टिंग, मे बी एक्सपेक्टिंग और मे बी एक साथ ही बोल रहे हो आर्यन? अब मुझे डाउट होना शुरू हो गया है कि मे बी का मतलब, एक्सपेक्टिंग का मतलब ही होता है मे बी होगा. वरुण देखो, इफ यू आर अटेम्प्टिंग, लुक, देख वरुण, लेट मी टेल यू वन थिंग. आई मार्क्ड ऑल द आंसर्स. ठीक है, सारे सारे के सारे सॉल्व करे. यू हैव ऑलरेडी सीन आई गॉट कपल ऑफ आंसर्स राइट, कपल ऑफ आंसर्स रॉन्ग. हाँ या ना? कि वो 2,4 होना चाहिए था, 2,-4 मार्क करके आ गए. ठीक है. सो देखो, जब आप पूरे 48 अटेम्प्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये है, ये कभी लेके नहीं चलना चाहिए कि आपके 48 के 48 सही होंगे. तीन चार गलत हो सकते हैं. ठीक है, तीन चार गलत होंगे, ठीक है. उसके बाद पांच गलत मान लो, 10 गलत मान लो, 10 गलत पे भी यू आर डूइंग फाइन. ठीक है. फिजिक्स चीता इज सेइंग अटेम्प्टेड 34, प्रोबेबली 3 रॉन्ग. इसका मतलब ये है कि अगर इस तुम्हारे तीन गलत हैं, इसका मतलब यू आर स्टैंडिंग एट अ स्कोर ऑफ 90. 90 आई वुड से इट्स अ डिसेंट. ठीक है. सो सो बेसिकली आई थिंक कॉल तो आ जाना चाहिए.
अनंत अगर 10 गलत रहेगा तो भी 38 थ्री से कितना होता है? 114, 104 नंबर आएगा तब। सो अगर 10 गलत भी रहेगा 104 भी तो कॉल आ ही रहा है ना। ठीक है। सो इस 104 पे तो आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और 80 85 प्लस पे बहुत होपफुल रहना चाहिए, अभी वो नहीं करना है। और बाकी कैट वैट में अभी अभी तो तुम लोगों के इंटरव्यू चल रहे होंगे या इंटरव्यू खत्म हो गए? सो नाउ दिस इज नॉट फॉर यू। टेस्ट सीरीज, आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू will expected only love, I would say expected cutoff this year should be lying between 90 to 95. Last year it was 85 to 90, so this year should be, it can be a little higher as compared to last year. So 90 to 95 will get you in. ठीक है, बट स्टिल अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ 83 84 85 के आसपास था, तो इस ईयर भी शायद 83 84 पे कॉल आ जाए, डिपेंडिंग हाउ मेनी पीपल हैव डन वेल दिस टाइम। ठीक है, सो विद दिस ऑल द बेस्ट फॉर द कॉल्स। चलिए, और अगर किसी को कोई और डाउट है तो पूछ सकता है, आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू दैट क्वेश्चन एज वेल। अनंत यू विल गेट, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, इट हैपेंड लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर पीजीडीबीए में, दे सेंड मी अ रिस्पॉन्स शीट। ठीक है, सेंड मी अ रिस्पॉन्स शीट वेयर आई मैच्ड माई आंसर्स। मेरे आंसर्स जो मैं मार्क करके आया था वो मैच नहीं कर रहे। ठीक है, और उन्होंने जो आंसर दिए थे वो भी सारे सही नहीं थे। ठीक है, नो आई थिंक मेरे वाले आंसर मैच कर रहे थे। हाँ, उनके आंसर्स गलत थे काफी सारे। देन दे रीशेयर्ड देयर सेकेंड, दे रिलीज देयर रिस्पॉन्स शीट सेकेंड टाइम वेयर दे गॉट एवरी आंसर। ठीक है, सो और उनके एक दो क्वेश्चन गलत थे जो उन्होंने रिट्रैक्ट किए, सो उसको लेके स्ट्रेस नहीं लेना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने आंसर मार्क किया है लेकिन उन्होंने कुछ और आंसर दिया है लेकिन तुम्हारा आंसर सही है। ऐसा हो सकता है कि बिकॉज इन पीजीडीबीए इट एक्चुअली हैपेंड, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्स शीट में गलत आंसर, जो करेक्ट आंसर कैट में जैसे देते हैं ना, उन्होंने करेक्ट आंसर ही गलत लिख दिया। एंड दिस हैपेंड, एक्चुअली हैपेंड। सो यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना है, पैनिक नहीं करना है। अगर आपको ऐसी डिस्क्रिपेंसी लगती है, विल डिस्कस द डिस्क्रिपेंसी एंड आई थिंक दे विल गेट इट राइट। वी डिडंट रेज एनी इशू, उनको उनके पास आई थिंक देयर वर सफिशिएंट इश्यूज वर रेज्ड, दे डिड इट ऑन देयर। ठीक है, फुटबॉल वाले का आंसर था दो। एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? अनंत, वो जो क्वेश्चन था वो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वो जो साइन है इंटरसेक्शन वाला, वो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है मैंने। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट साइन टुडे। ठीक है, सो वो मैं आज करके देखूंगा। ठीक है, सो विद दिस लेट्स फाइंड आउट, टेक केयर, बाय बाय।